मैं आज इस वेबिनार से जुड़े सभी सम्मिलित प्रतिभागियों का नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अ, भगवान भोसले, डायरेक्टर नेशनल सेफ्टी काउंसिल, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। स्कूल सेफ्टी अवेयरनेस एवं एनएससीआई स्कूल सेफ्टी अवार्ड्स 2026। पीपीटी शेयर कर। सो इस महत्वपूर्ण उपक्रम के चलते हुए जो हम लोगों ने इस महीने में इनिशिएट किया है, आज उसी श्रृंखला का एक भाग, एक हिस्सा करके आज हम नेशनल लेवल पे वेबिनार प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस वेबिनार का मूल उद्देश्य है कि स्कूल सेफ्टी अवेयरनेस आप सभी के लिए पहुंचाया जाए और जो करंटली हमारी एक नेशनल प्रायोरिटी है उसको आपके साथ जुड़ा जाए, ये उद्देश्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एनएससीआई की स्थापना 4 मार्च 1966 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। पिछले 6 दशकों से अधिक समय से एनएससीआई देश में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण यानी एसएचई से जुड़े एक व्यापक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। हमने उद्योगों, संस्थानों, सरकारी विभागों और असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षण, ऑडिट, अवेयरनेस कैंपेन और अवार्ड के माध्यम से सुरक्षा मानकों को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज हम एक नए और बेहद संवेदनशील क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल और हमारे बच्चों की सुरक्षा। पिछले कई महीनों की खबर पर अगर हम नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विषय कितना जरूरी है। आपके स्क्रीन के सामने यही दुर्घटनाओं का विवरण दिया गया है। भोपाल में स्कूल बसों में सुरक्षा का उल्लंघन हो, स्कूलों में अग्निकांड हो, राजस्थान में छत गिरने से बच्चों की जान जाना हो, दिल्ली के हजारों स्कूलों में सुरक्षा संबंधी कमियां हो, ये सभी घटनाएं हमें यह याद दिलाती है कि भौतिक सुरक्षा यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेफ्टी अभी भी हमारे विद्यालयों में एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। साथ ही में आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण और स्क्रीन टाइम से जुड़े खतरे हमारे बच्चों के सामने नई चुनौतियां लेकर आए हैं। और इन सब के साथ और एक चीज के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, वो है बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य। हमारे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण भी उतना ही अहम है जितना कि उनकी शारीरिक सुरक्षा। यही कारण है कि एनएससीआई ने जुलाई माह में स्कूल सेफ्टी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सुरक्षित स्कूल आज, सुरक्षित भारत कल, इस भावना के साथ नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया इस मुहिम में जुड़ गई है। इस जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में एनएससीआई ने अपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर कई महत्वपूर्ण संसाधन साझा किए हैं। हमने विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें विभिन्न सुरक्षा विषयों को गहराई से समझाया गया है और जिसके बारे में हमें बहुत सारे अच्छे फीडबैक भी मिले। हमने साथ ही में स्कूल सुरक्षा उत्कृष्टता के 9 स्तंभ पर आधारित एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रकाशित की है जो स्कूलों के एक सुरक्षित, स्वस्थ और सहयोगी वातावरण बनाने में मार्गदर्शन करती है और जिसका लाभ बहुत सारे स्कूल ले रहे हैं। जुलाई माह हमने स्कूल सेफ्टी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया। इस दौरान हमने कई जगह जागरूकता लाने की कोशिश की। इसी क्रम में हमने इस महीने में स्कूल सेफ्टी के लिए एक डेडिकेटेड वेब पेज जारी किया है, जिस वेब पेज की तहत हम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर किए हैं जो सभी स्कूलों, प्रिंसिपल, टीचर्स या एजुकेटर्स को बहुत ही उपयोगी होंगे, जिसमें एनसीपीसीआर के गाइडलाइंस हो, एनडीएमए के गाइडलाइंस हो
या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग अलग वीडियो। ये बेहद ही आप सभी को एक सेफ स्कूल कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में आपको प्रेरित करेंगे और आपको उस दिशा में एक साझा स्टेप फॉरवर्ड ले जाएंगे। और इसी को आगे लेके जाके 10 जुलाई 2026 को हमने एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड फॉर स्कूल 2026 की घोषणा की है। ये एक अग्रणी राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों में सुरक्षता संस्कृति का संस्थागत रूप से स्थापित करना है। यह पहल विकसित भारत के विजन के रूप के अनुसार सुरक्षता सचेत भावी पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारे महानिदेशक डॉक्टर ललित गबने जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, स्कूल जिम्मेदार नागरिकों और भविष्य के नेताओं को गढ़ते हैं। यदि हम बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षित व्यवहार, तैयारी और जागरूकता विकसित करें तो यह एक संरक्षित और सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अभी हम पिछले कई सालों से इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी इसमें क्या सहयोग हो सकता है, यह भी बहुत जरूरी है। स्कूल की सुरक्षा केवल स्कूलों और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक होल स्कूल अप्रोच की तरह एक सभी का साझा उत्तरदायित्व है, जिसमें उद्योग जगत की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उद्योग अपने अनुभव, तकनीक और संसाधनों के माध्यम से स्कूलों को एक संरक्षित और सहयोगी शिक्षण वातावरण बनाने में सक्षम बनाता है। उद्योग संगठन, जहां बहुत सारे आज सेफ्टी प्रोफेशनल भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, अपने अपने तरीके से इस महत्वपूर्ण संकल्प के लिए योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले वे स्कूलों में संरचनात्मक या विद्युत या अग्नि फायर सेफ्टी ऑडिट करवाकर तथा सीसीटीवी जैसे सुरक्षा 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 सॉरी प्रणालियां स्थापित कर स्कूल के बुनियादी ढांचों को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, अपने तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षितता का प्रोटोकॉल तैयारने में स्कूल को सहयोग दे सकते हैं। और आज मैं इस वेबिनार के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूं। इस वेबिनार का उद्देश्य है कि एक सुरक्षित स्कूल का निर्माण कैसे किया जाए और सुरक्षितता संस्कृति, सुरक्षा प्रणालियों, स्वास्थ्य एवं कल्याण, अग्नि सुरक्षता, आपातकालीन तैयारी तथा संरक्षित और सुरक्षित परिसर, इन स्तंभों पर इस वेबिनार में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि अगले 1.5 घंटे में हम सब मिलकर एक सार्थक और उपयोगी चर्चा करेंगे, जो न केवल आपके स्कूल के लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखेंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़े हैं जो अपने अनुभव और ज्ञान से हमें लाभान्वित करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कश्यपी अवस्थी को। डॉक्टर अवस्थी शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में 18 वर्षों के अनुभव के साथ एक प्रतिष्ठित एकेडमिशियन है। वर्तमान में वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्था यानी एनआईईपीए के एजुकेशन पॉलिसी विभाग में कार्यरत है। इससे पहले महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात के शिक्षा विभाग एवं सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एंड एजुकेशन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर टीचर एजुकेटर के रूप में सेवाएं दी। डॉक्टर अवस्थी की शोध रुचि स्कूल शिक्षा, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी, स्कूलों में समानता के मुद्दे, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक विकास और स्कूल नेतृत्व में रही है। उन्होंने गुजरात के लिए सर्व शिक्षा अभियान, वैकल्पिक एवं नवोन्मेषी शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन और शिक्षा सबके लिए जैसी योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु शोध भी किए हैं। वे विभिन्न राज्य सरकारों की सलाहकार संस्थाओं का हिस्सा रही है, जैसे ओडिशा सरकार की शिक्षक शिक्षा
सलाहकार निकाय की सदस्य या फिर सिक्किम सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु कार्य समूह की सदस्य। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की कई समितियों में भी उन्होंने योगदान दिया है, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना, डीआईटी का पुनर्गठन, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट रोड मैप, मनोदर्पण कार्य समूह तथा स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कार्य समूह शामिल हैं। वे भारत की विविधतापूर्ण स्कूलों के लिए प्रासंगिक नेतृत्व मॉडल विकसित करने हेतु जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसके साथ ही मैं हमारे दूसरे वेबिनार के एक्सपर्ट से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ है सुधा आचार्य जी, प्रिंसिपल आईटीएल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 द्वारका नई दिल्ली। आचार्य जी 25 साल से अधिक वर्ष के अनुभव के साथ एक कुशल शिक्षाविद है, जिन्हें पाठ्यक्रम डिजाइन, समावेशी शिक्षा और छात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। वे नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस एनपीएससी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। उनका कार्य मूल्य आधारित एकीकृत शिक्षण, बहुमापदंड मूल्यांकन और शिक्षक विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित रहा है। वर्ष 2024 में यूथ आइडियाथॉन में वित्तीय साक्षरता श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रतिष्ठित प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं डॉक्टर कश्यपी और सुधा आचार्य जी दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं उनके विचार और अनुभव आज के सत्र को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब हर स्कूल सुरक्षित होगा तभी हमारा भारत सुरक्षित और सशक्त होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर कश्यपी जी को निवेदन करता हूं कि ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। Thank you so much. Bhagwan ji, am I audible? Yes, audible, ma'am. Okay, wonderful. Thank you so much for that kind introduction and for organizing such a topical webinar. And in fact, school safety and security is very close and very rightly said. तो मैं पूरे नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया को बधाई देती हूँ, जो आपने जुलाई माह को एक स्कूल सेफ्टी माह के स्वरूप में उसका चयन किया है और इस प्रकार से स्कूल सेफ्टी पर आप कार्य भी कर रहे हो और उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हो थ्रू स्कूल सेफ्टी अवार्ड्स। In fact, there's a message on the chat box. आप इंग्लिश में भी बात कीजिए, so I'll try to be bilingual so that the audience that has joined understand both in that sense. So I begin by congratulating the National Safety Council, and I have with me my dear colleague Dr. Sudha Acharya, and to just begin with the one and a half hour time that we have. Two of us have planned in a manner wherein I'll conceptually and from being a part of the committee working group for designing school safety and security guidelines, the kind of conceptual understanding we've tried to build. So I'll begin from there, and then we'll have Sudha ma'am really talking about how she has practiced and as a school principal really been action oriented to actually see school safety and security happen at the school level and making it a reality. So that brings in both academic as well as a practitioner perspective to the audience that we have. And इसलिए उसको एक हम केवल एक क्रिया के स्वरूप में नहीं देखते हुए स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को एक आइडिया, एक फिलॉसफी, एक वैल्यू और बिलीफ के स्वरूप में भी देखें. And therefore, it's very important if we really look at two perspectives that emerged in the National Policy on Education, NEP 2020, जहाँ पे वो सबसे पूर्व कहता है, एक विजन है जहाँ पे वो पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं, एंड रोल ऑफ स्कूल लीडरशिप इन एक्चुअली क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट. And here, NEP is emphasizing not just on student safety security, but creating inspiring workspaces that brings in school teachers,
and helps them to also be committed and motivated for the cause of education. दूसरी बात जो एनईपी 2020 करता है वो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर भी भार देता है, जहाँ पे वो टीचर्स और लर्नर्स को एक समान देखते हुए दोनों के मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पे बात करता है। तो आज जब हम तीन मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन थ्री की एस्पेक्ट्स. One is certainly the physical safety and security that we're talking of. The second is the mental and the emotional well-being that we're talking of, mental, social, emotional well-being. Third, of course, the health, hygiene, nutrition aspect, and all of it put together actually conceptualizes or gives a holistic perspective of what we would understand to be school safety and security in that sense. So, not limiting to physical safety. So, therefore, we would be looking at each of these aspects. अब इसको आगे आप जब जोड़ो तो जो NCFSC आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, उन्होंने पूरा अपना पार्ट ई जो है वो इकोसिस्टम, एक चैप्टर ही पूरा ब्लॉक इकोसिस्टम पर दिया है, जहाँ पे वो आउटडोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरिंग इंक्लूजन पर पूरा बात करते हैं. तो नई शिक्षा नीति और उसके बाद का करिकुलम फ्रेमवर्क भी हम अगर देखें तो बहुत ज्यादा एम्फोसिस देता है that how do we have school infrastructures that support and strengthen safety, that ensure inclusion. And then it moves ahead to really talk about, dedicates another entire chapter on the role of leadership. Therefore, it's very significant that we have a school leader with us today who's actually leading it from front and has done all of it. And you have someone who's been a part of the committee and learned through what has come up from the school leaders. So together we will try and make this really look at how conceptually and philosophically we are looking at school safety and security, but what it means in practice. So इसको मैं थोड़ा सा not directly coming to the action, I'm taking you back. अगर school safety and security हमारा objective है, तो इसके पीछे की हमारी philosophy, हमारा belief, हमारी value system क्या है? So if we really go back, and perhaps our belief or a value underlying is we want every child to grow in a free manner. We want every child to not feel stressed. We want them to really grow in an organic, natural environment. और अगर ये हमारा underlying belief है और इसके लिए हम safety and security ensure करना चाहते हैं, तो फिर ये अंडरलाइंग बिलीफ हमारे स्कूल के एथॉस में और हमारे स्कूल के कल्चर में और हमारे स्कूल के प्रत्येक प्रैक्टिसेस में कैसे दिखता है और कैसे दिखना चाहिए. So it's very important, therefore. So rather than coming to the individual practices or SOPs, I would want every school principal to go back and take a reflective look on what are the school ethos that we have. What is the school culture that we have? What is the vision of our school? What are those underlying values and belief systems that a school has? Are they simply a, a quotation in the principal's room, or they are actively being practiced across all kinds of stakeholders, across all spaces in the school, and is reflected in each and every behavior? और इसलिए एथॉस क्या है उसको समझना, जैसे हम नेशनल एथॉस की बात करते हैं, अगर आप एनईपी को देखो तो वो एनईपी का पहला वाक्य इंडियन एथॉस है, और एनईपी कहता है एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन एथॉस. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडियन एथॉस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वेस्टर्न एथॉस. तो अगर हम इंडियन एथॉस कहते हैं तो वो इंडियननेस क्या है, वो किस प्रकार से परवेजिव हो सकती है, ये समझ होनी चाहिए. तो अगर हम स्कूल सेफ्टी की ही जब उसी प्रकार से बात करते हैं, then we need to understand the underlying beliefs, the attitudes, the values, and therefore how pervasive they have to be across at all levels. तो इसलिए हमारे स्कूल के एथॉस क्या है? अगर आप कहो मेरे स्कूल का एथॉस हार्ड वर्क है, तो क्या आप लर्निंग को प्रायोरिटाइज करते हो ओवर मार्क्स?
और अगर आप केवल पहला नंबर लाने वाले बच्चे को ही आप वैल्यू कर रहे हो और केवल उसी को हम मोटिवेट कर रहे हैं या रिवॉर्ड कर रहे हैं, फिर वो आपका इथोस नहीं हो सकता, है ना। हार्डवर्क आपका एथोस नहीं हो सकता। एक और उदाहरण देती हूँ। लेट्स से आप कहते हो कि हमारे स्कूल में सब बहुत कोलिजियल हैं, है ना, पर आपकी जो लीडरशिप है, आपका जो नेतृत्व है, वो केवल हायरार्किकल है, वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड है, सभी को कार्य देना और सभी को उस कार्य के लिए अकाउंटेबल बनाना, और इरिस्पेक्टिव ऑफ व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति क्या है या व्यक्ति की पर्सनल स्थिति क्या है, उसको ध्यान में नहीं लेते हुए आप केवल टास्क का फॉलो अप लेते हो, देन यू कैन नॉट call yourself to be a collegial school, right? Similarly, when we talk of school safety and security, सेफ्टी तो आप फिजिकल मेजर्स से बिल्ड कर सकते हो, बट व्हेन वी टॉक ऑफ सिक्योरिटी इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल सेफ्टी, इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशनली फीलिंग। तो वो सेफ्टी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से आएगा, सिक्योरिटी एक इमोशन, एक फीलिंग है। आई फील सिक्योर बीइंग इन माय फैमिली, so there is something that my family tells me every day, in every way, in every action, कि हम आपके लिए हैं, है ना। तो वो उनका प्यार है, उनकी मेरे लिए केयर और कंसर्न है। वैसे ही आपका स्कूल क्या कहता है। I went to a school in the remotest place in Rajasthan, and a very desert area. Absolutely reaching to that school had, except for desert sand, I didn't find trees or anything around. But when I reached to that school had beautiful greenery. It had trees and it has plants with flowers. And the moment I opened the school gate, two young girls came running with a small bouquet of flowers. And I was shocked कि आपको पता था मैं आ रही हूँ, because I went as a researcher and I had absolutely not informed anybody that I'm going to visit their school. And those young girls of grade 7 or 8, because it was an elementary school, said very proudly, no ma'am, हम तो वेलकम कमेटी के बच्चे हैं, हम हर दिन फूल बनाते हैं और कोई भी हमारे स्कूल आए तो हम उनको देते हैं। So irrespective of that, spoke of the ethos of the school, that spoke how every child in the school had owned up the school and was practicing those ethos all in and out. I went ahead to find out what the school had in terms of the organization. It entire had a student management system, students managing the cleanliness, students managing different aspects of the school, even the timetable for that matter, as in what they wanted in terms of. And that really defined the school. The belongingness and the ownership in the children was so high कि स्कूल का कुछ भी इधर उधर हो तो वो बच्चे तुरंत उसको क्लीन कर देते थे, बच्चे तुरंत उसको ऑर्गेनाइज कर देते थे, and they were out and out there for the school. And that in fact showed how the values and the beliefs ingrained in the school was, this school is for all, this is an inclusive school, this school welcomes everybody. As against that, मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। My niece was visiting me at Delhi, वो interstate basketball competition खेलने के लिए nationals में यहाँ के, I'm not naming the school, यहाँ के दिल्ली के एक elite school में खेलने आ रही थी और मैं उसे वहां मिलने जा रही थी। उसने परमिशन ले ली थी, मैंने भी परमिशन ले ली थी कि क्या हम मिलने आ सकते हैं। The moment I reached the school gate, there was a cabin for the security guard, but I didn't find the security guard there in the cabin. So I was just walking around to see कि कोई है जिसे मैं बता सकूं I have come to visit and all. मुझे कोई दिखा नहीं, पर मैं थोड़ी सी 10 कदम ही आगे बढ़ी हूं तो पीछे से आवाज आई, हेलो कहाँ जा रहे हो। And I didn't like that voice and the rudeness that came in the voice, as if I was a thief entering into the school premises. But that also tells of, while safety and security is really important, have we briefed every member in the institution of how to approach
strangers, how to talk to people. So does our school, and therefore I begin by saying ethos क्या है? सेफ्टी एक फिजिकल मेजर है या सेफ्टी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट ऑफ केयर है? डज अ स्कूल हैव एन एथिक ऑफ केयर? Does a school have stand for an ethic of inclusiveness? Does a school stand for an ethic of concern, of value, of क्या है हमारा स्कूल का वो ethos? और किससे हम सब बाइंडेड हैं? Therefore, it's very important what this would bring in. फिर जब ये ethos in place होंगे स्कूल में, तो आपको अलग अलग मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे. यू विल नॉट हैव टू वर्क सेपरेटली फॉर मेंटल एंड सोशल वेलबींग and differently for physical well-being and differently for health and hygiene. Then perhaps all of it comes together, because for you it's the individual which is important, and how do you nurture this individual is the core of the school, is the concern, is the ethics or the ethos that the school bears. And वो आपको फ्लो करता हुआ मिलेगा स्कूल के पूरे कल्चर में. वो आपको फ्लो करता हुआ मिलेगा स्कूल की सभी प्रैक्टिसेस में. जो भी स्कूल, चाहे वो उसके नोटिस बोर्ड्स हो, चाहे वो उसके छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हो, चाहे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे टीचर मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे पेरेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, engaging and involving every stakeholder in the decision making, a feeling of ownership and belongingness ho. And therefore before we begin into the do's and don'ts of school safety and security, I thought it's really very important to understand the, the ethos of school safety and security, developing a culture of school safety and security where everybody feels safe. भगवान सर ने कुछ slides दिखाई कि क्यों इसकी जरूरत है, of the incidents that have taken place in different parts of the country, and some of these incidents actually move you. I was just thinking of an incident where in Uttar Pradesh, where a teacher burned the private parts of a small 5 or 6 year old child because he peed in the classroom. And मेरा दिमाग ही बंद हो गया. I couldn't just think कि seriously. तो जब ऐसे वाकया होते हैं, it's therefore very important, without ethos and without establishing school values, beliefs, without consciously making an effort to develop a culture of care, हम स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाएंगे. क्योंकि ये मल्टी सेक्टोरल की सर ने बात की. Apart from multi-sectoral, it needs a whole school approach. Certainly every sector. अगर आप में से किसी ने स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस पढ़ी हैं, तो उसका पहला चैप्टर जो है, पहला वाक्य जो है, वो यहाँ से शुरू होता है. टू रेयर अ चाइल्ड यू नीड अ विलेज. यू नीड अ विलेज टू रेयर अ चाइल्ड. और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम इकोसिस्टम अप्रोच से कार्य नहीं करेंगे. तो एंड इट्स अ वेरी वेल नोन प्रोवर्ब इन दैट सेंस. और आज के जमाने में जहाँ पे वी हैव both parents working, there's a housemaid at home, there's a child caregiver, there's a creche, there's a preschool, there's a school, there's a neighborhood society, and all of them form an active part of the ambience that hugely impacts the development of the child. So अब ये जो बाकी के सब हैं वो तो अनस्ट्रक्चर्ड है. इनमें से केवल एक ऐसा है जो कि स्ट्रक्चर्ड है, वो है स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन और स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन. और इस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को डिजाइन किया गया है इस प्रकार से that it nurtures the child and the future of the nation. And therefore, if you see, आज कोई भी माँ बाप से अगर आप पूछेंगे, वो अपने बच्चे को इवन पड़ोसी के यहाँ 1 घंटा छोड़ के जाने में झिझक होगी, पर स्कूल में 5 घंटे के लिए आराम से आपके पास छोड़ कर जाते हैं. Which means there is an element of trust that the society places on the school, and therefore how important it is
for schools as these structured institutional systems to actually ensure school safety and security, and therefore develop ethos, therefore develop a culture where every individual, every stakeholder feels secure, feels owned, feels belonged to, feels एक्सेप्टेड, फील्स रिस्पेक्टेड, है ना? ये भी बहुत जरूरी है कि मैं जैसा हूं वैसा मुझे एक्सेप्ट किया जाता है ना? सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, मुझे रिस्पेक्ट किया जाता है और मुझे एक स्कूल प्रोसेस का हिस्सा बनने का अवसर दिया जाता है. सो पीपल फील एक्सेप्टेड व्हेन देयर वॉइसेस आर हर्ड. तो एक्सेप्टेड केवल एक टर्म के तौर पे नहीं रहना चाहिए, पर क्या आपके स्कूल के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी है? अगर है तो वो एक्सेप्टेड का एक्चुअल मतलब हुआ. क्या आप छोटे से छोटे बच्चे की वॉइस को भी रिस्पेक्ट करते हो? हमने अभी ह्यूज प्रोटेस्ट देखे जंतर मंतर पे. उसका अगर अंडरलाइंग एजेंडा अगर हम देखें तो केवल इतना ही था, आवर वॉइस शुड बी हर्ड. बाकी मुद्दा कुछ भी लेकर के आए, मैं सही गलत प्रस्थापित नहीं कर रही हूँ, पर मैं केवल कि वो जिस प्रकार से बच्चे इकट्ठा हो रहे थे, इट वाज ओनली अबाउट कि हमको सुनो. सो इट्स द नीड फॉर पीपल टू बी हर्ड, एंड दैट नीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वॉसिफरस, स्पेशली इन टूडेज जनरेशन. कि अगर आपने, हम उस जनरेशन से आते हैं जहाँ पे बड़ों ने कहा वो सब कुछ सत्य होता था, बट आज की जनरेशन में इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देयर वॉइसेस टू हैव स्पेस. एंड हाउ डज द स्कूल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म where every voice has a space, and it's very important that that platform is created, that space is created. So with this, I want to invite Dr. Sudha Acharya. I think she will take us from a national or a generic dialogue to school specific. And then maybe after some time, Sudha ma'am, I'll again come to the national dialogue and how we've really evolved with the school safety security guidelines, why it needs to be multi-sectoral. But I think हम दोनों का आना जाना और ज्यादा इसको interactive बनाएगा. So I want to stop here and I want to invite Sudha ma'am to really take us ahead with how she does it in school. Kashyapi ma'am, is my presentation visible? अभी तो नहीं सुधा मैम, आप शेयर करो. अच्छा, I was sharing. आपने शेयर किया है? हाँ. Is it? It is showing on my screen. मैं एक बार कोशिश करके देखूं. हाँ. अनिश को बुला. प्लीज चेक करिए, नहीं तो हम हमारे यहाँ से शेयर करेंगे. Okay, okay. I'll just give me 1 minute. या. मैंने शेयर किया. सुधा मैम आपको दिख रहा है? अच्छा, हाँ दिख रहा है. हाँ दिख रहा है. चलो. So you can go ahead. I'll share. Okay, okay. I'll go to the next slide. Okay. So I'll be sharing today the best practices which I nurture in my school as a safe school for nurturing happy minds. That's my caption today. So for me, my vision is very loud and clear for all the stakeholders to provide equitable and holistic education, ensuring a safe and happy learning ecosystem which nurtures humanistic skills, fosters character building, and instills compassion for the community and for the environment. What you are seeing on the screen is hallmarks of a safe school. So I have taken all the 3 parameters Kashyapi ma'am was speaking about. First one is, and then in NCF, we are talking about Panch Kos Vikas. So we are starting with Annamaya Vikas, which is really the survival, physical well-being.
when the child is approaching us in nursery, in pre-primary, 3 साल की बच्चा हमें पेरेंट्स ने इतनी ट्रस्ट के साथ हमारे हाथ में सौंपते हैं, सो हम ये ट्रस्ट की कैसे वर्दी बनते हैं, और अपनी स्कूल को हर तरफ से कैसे सेफ बनाते हैं. नॉट ओनली फिजिकल सेफ्टी, दैट इज वन पैरामीटर. बच्चे जब आते हैं वो क्ले की तरह होते हैं, पहली बार पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं, इमोशनली भरे होते हैं, तो हम उनको वो इमोशनली सिक्योरिटी कैसे देते हैं. हो सकता है उनकी भाषा में बात करके, उनको क्या पसंद है, म्यूजिक पसंद है, खेलना पसंद है, क्या पसंद है, हर वक्त anybody, one adult accompanying the child anywhere in the school premises so that the child feels secure. So hallmark of a safe school, जब हम बात करते हैं तो physical safety, different parameters I have shown you here, and positive school climate. So as ma'am was talking about, safety should be a school culture. It should be in our mind. It's empathy and caring for others. So, and then all the stakeholders should be included here, not only teachers and admin or management, even conservancy staff also. स्कूल में जो दीदीज भैयाज हमारे साथ काम करते हैं, जो बच्चों को गोदी में भी उठाते हैं 3-4 साल में, उनकी केयर करते हैं, उनके साथ अकम्पनी करते हैं वॉशरूम तक, तो उनको भी हम काफी ओरिएंट करते हैं. सो वो बहुत जरूरी है कि स्कूल की, आप जब स्कूल में एंटर करते हैं, मैम अभी एग्जाम्पल दे रही थी कश्यपी मैम, सो आप अगर मेरे स्कूल में एंटर करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज हु कैन एंटर. And that's the point where we have to ensure safety. I mean, no stranger at any point of time. So there is a rule, there is a culture, how they can come with a visitor slip, with writing properly, whom they are going to meet, what is the reason, everything. So everybody is aware that somebody is coming to meet. And जैसे मैम ने बताया, बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, स्टाफ होते हैं, to welcome. So everybody's feeling valued. So physical safety बहुत important है, and it's an inclusive school. So school में ramp, railing, सब कुछ होना चाहिए. Proper signage. आप स्कूल में enter किए, आपकी स्कूल कैफेटेरिया किस तरह, प्लेग्राउंड किस तरह, पूरी proper signage के साथ, so that you are including everybody. So that physical safety, जैसे मैंने अन्नमय विकास की बात की. Next one is मनोमय, which we are talking about socio-emotional well-being. This is the vision I'm showing very, very clear, where safe and happy learning ecosystem is focused here. So it's a whole school approach where every child matters. Every child is accepted, respected, valued without any discrimination. And our classroom is so diverse, irrespective of geographical identity, language diversity, or socio-emotional diversity. We are accepting each one equally. In school, everybody is equal. So I'm showing you few features of physical safety. You can see the secure campus, fire safety instrument, evacuation plan displayed. This is very, very important. Where is the child at present? If in case of any natural disaster or anything happening, the child should know how to evacuate. So every school corridor, both the sides, the evacuation plan is very nicely displayed. And my school is also mapped for visually impaired children. So they know where and where to go for physics lab or playground or school cafeteria. Whole school is mapped. So they feel so comfortable. So child protection and safety mandatory committees. Now this is very, very important in CBSE also for long years. These are mandatory. So we are having it right from 2012 when POCSO Act came into being. So from that year onward, we have Child Safety Committee, POCSO Committee, Child Welfare Committee, POSH Committee. Education Ministry gave us Wellness Committee. There is compulsory wellness teacher. So only committee will not do. These committees should not be in the pen and paper. Monthly meeting hona chahiye. Minutes has to be recorded. All the members should come. Social service workers are involved. I have involved Delhi University professors also from social work department so that they guide us. And lot of sensitization session for students about POCSO. You can see here the legal professional are coming to the school to train our students and teachers. Delhi police also professionals have come. They have also oriented. And this is screening of wings and awareness cartoon.
about child sexual abuse. For junior wing, for primary wing, we show and child line videos also every time, and these are the parent doctors. So how beautifully parents as equal stakeholder are coming inside the school premises, and they are sensitizing our own children on good touch and bad touch. Next slide, please. So awareness session for students on POCSO by Delhi Police. Already I have mentioned this, and this is very, very important. Here, Dr. Nagpal, a very well-known psychiatrist, we really collaborate with him every month. He comes and orients on different 21 disability variety of children are in our school. My school is inclusive school, so I have a lot of special need children. How they feel secure, how their parents can trust us. So that's why parents are part of it. He's orienting the parents as well as students and teachers, everybody. So orientation session for parents on POCSO. Staff capacity building awareness session for teaching and non-teaching staff is very, very important. Teachers, we keep on doing capacity building, but non-teaching staff or admin and conservancy staff, most of the time, we try to omit. So here you can see recently we did by the school counselor. She's also orienting teaching and non-teaching staff. Next slide, please. See, I am orienting my conservancy staff in the school auditorium itself, my school counselor, myself, all of us are orienting them what should be their conduct, how they should treat children inside the school premises, and their behavior, maintaining school decorum, everything we keep on, it's not one time. Continuously, we keep on orienting them so that it is reinforced in school. Next slide, please. So this is emergency preparedness. We do NDRF conducting workshop on different mitigation strategies to rescue the victim after a disaster. Mostly earthquake in Delhi. In case of Delhi, we don't see so much flood or other calamities, but we have experienced terrorist activities, bomb alert, and earthquake. So that way we have school hooter system, and within 5 minutes, the whole school gathers at the school playground. So we have trained them which staircase to take, how to move in line. Everything has been trained to them. So that kind of care also we have taken. These are mock drills from time to time. Training minds today for safer tomorrow. Even doctors keep coming, and when parents are not there, when teachers are not there, emergency care, what they can do on their own, that also we have trained our teachers. This is very important feature, safety walk. I may take 10 rounds every day in school, but I can't see the danger point because I see it every day. So in safety walk, I involve parents, I involve student representatives and all the teachers, even conservancy staff and admin staff. So all of us, we work together, and they point out, the students, basically the council body, they point out wherever they feel that this is a security point or here there is scope for improvement. We do that every month and maintain the record. Next, please. And then you can see here safety play. This is every month once, Friday last period, they take safety pledge, all classes together, so that it is reinforced. Digital safety, this is very, very important nowadays. Just before this session again, I was dealing with a case where digitally something has happened. Instagram is the craze now. The children are living real life than real life. And they don't understand that digital footprint cannot be erased. Even if you delete, it won't go. So what we do from 6 to 8, we have done 8 digital citizenship skill given by World Economic Forum. So 6 to, because we have observed by the time the child reaches senior school or class 5, 6, they have smartphone. So in my school, at least, I have banned smartphone. I have allowed keypad phone for safety and security of children because they have to communicate with their parents or reach home safely. So I have allowed that. So that's why smartphone is not there. So at least till that point, 6 hours, children are out of any gadget. But digital safety, even if it is happening much beyond school, school में होता नहीं है. Beyond school, रात को किसी ने कुछ डाला, name calling, body shaming, all these things are happening, but we are dealing with that. Finally, there are children. Parents keep coming to us, ma'am, ये आप संभालो. हम नहीं इनको कंट्रोल कर पा रहे. हमने एक अकाउंट तो डी इंस्टॉल कर दिया, बट 4 और अकाउंट है.
सो इसके लिए हम डिजिटल सेफ्टी के लिए आजकल ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं बिसाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चरल और फिजिकल सेफ्टी. सो time to time we do courses on or sessions on cyberbullying also, and keep reminding children that be socially, morally, ethically responsible while using social media. You may I mean, if you have a smartphone, the whole world is with you, you can learn so many things, but children generally they don't do that. So that's why we saw boys locker room, girls locker room, and morphing the body image, posting it publicly, affecting the self-esteem. All those things are happening in school every day. There is a story. So we are dealing with that and keep on orienting children on digital safety. This is very, very important for me now. So the next one is health, hygiene, and nutrition. I would start with diet, sleep, and exercise hygiene. For small children, of course, we keep on reinforcing for hand washing and I mean the trivial things which are important for them, recognizing body parts, which parts anybody can touch or do not touch, all these things we do. But otherwise, if the school is a premises where I mean, health, hygiene, and everything should be taken care right from school cafeteria. We have school canteen, so our school cafeteria is a millet cafeteria. So maintaining their nutritional balance, and then even holiday homework also, I have given balanced meal pattern right in the morning. What kind of drink they should have, what kind of breakfast, all those things we have given so that our young generation should be happy and healthy. And we had a lot of competition on millet products. Our children have made even pizza, burger, drink, everything out of millets. So they went on innovation spree, and every day there was a line in my room that, ma'am, आज हम millet की burger बनाए हैं, राजमा की टिक्की बनाए हैं. So you see that how healthy we are making. And in my canteen, no junk food is available. हम लोग राजमा चावल अवेलेबल कराते हैं, कड़ी चावल बच्चे खाते हैं बड़े शौक से. एंड अगर इस टाइप की हम खाना देते हैं, becomes a habit. Or midday meal, maybe parents nowadays preferring school meal, that it is a balanced meal and our children are having. We don't have time in the morning to give such kind of meal, so it's very well appreciated. So that is very, very important. Smart food is very important for a smart generation. Awareness session, this is very important. Every month we do. Nowadays what I observe is class 4 child, 8 साल की बच्चियां, they are going through this menstruation periods and all, and they don't have any understanding, and they got panic. Most of the time ये school में ही start होता है, and we have a sanitary napkin machine there, vending machine there. So there is no problem. We keep on saying parents that be assured, we'll help your child. We do orient them how to take care. So menstrual hygiene के ऊपर बहुत काम होता है. I think every school is doing there. We call resource person and experts to do that. But boys puberty के ऊपर hardly कोई कोई बात करते हैं. सो वो पार्ट थोड़ा सा नेग्लेक्ट होता है. एंड जब हमने OMG 2 मूवी देखे थे जिसमें ये टॉपिक को बहुत सुंदर से वो मूवी डील किया था, इट इम्पैक्टेड मी. And then from that movie onwards, every 6 months I'm doing a session on boys puberty. Not only a doctor is coming, you can see the whole team is coming, endocrinologist, psychologist, a doctor, everybody. What bodily changes are happening, what you feel like doing, and from where you get authentic information rather than going to your peer group or from unauthentic sources. So we keep them informing, giving them authentic information through our parents only. So fortunately, I have more than 135 doctor parents, and so I keep calling them. So they come for dental hygiene, they come for menstrual hygiene, they come for boys puberty. But boys puberty was very well accepted by my parents. So father said that, ma'am, generally we don't talk. I don't know, we don't know why there is so much inhibition. Maybe हमारे साथ किसी ने बात नहीं किया था. So हमें थोड़ा सा यहाँ apprehension है कि बच्चों को कैसे हम orient करें. So इस साल मैंने ये किया है कि पापा एंड मी, डैड एंड मी. So father के साथ बैठो boys, and then we'll orient you so that inhibition will go.
मॉम एंड मी भी मैं कर चुकी हूँ कि घर में जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, मदर्स को पता ही नहीं है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है एंड लड़कियों को कैसे गाइड करना है. So mom and me and papa and me are very very popular sessions in my school, and that is going on very well really. And mostly सारे even principal मेरे colleagues बताए हम लोग कभी भी boys puberty के ऊपर program नहीं किए हैं, which is very important. And this one, our government also focused on low sugar and no oil challenge. So initially when it came zero sugar. So the doctor parents said, सुधा मैम ये गलत है, जीरो शुगर हो नहीं सकता, सब खाने में कहीं ना कहीं शुगर की अमाउंट है. सो आप जब बोर्ड बनाएंगे वो लो शुगर होगा. एंड हमने एक अभियान चलाया था, आईटीएल लेबल पढ़ेगा आईटीएल, जो आया था लेबल पड़ेगा इंडिया से, हमने करा था लेबल पड़ेगा आईटीएल, सो दैट एवरी चाइल्ड बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट विल सी द लेबल. what is the glycemic index, what is the carbohydrate, एनर्जी कितना है, फाइबर कितना है, सब पढ़ो एंड देन आप खरीदो. सो एक सुगर स्मार्ट आईटीएल हमने कैंपेन किया था. एंड ऑयल का भी हमने लिया था कि कितनी आप कम कर सकते हैं एंड बिना ऑयल की क्या क्या खाना बन सकता है, तो वो भी हमने कंपटीशन रखा था. एंड समर वेकेशन में ये हमने हॉलीडे होमवर्क दिया था कि आपने ये डाइट मेंटेन करना है 3 weeks, एंड 4th week में यू सी द इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आप फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लो शुगर एंड लिमिटेड ऑयल कंजम्पशन. सो दैट ऑल्सो द होल फैमिली गॉट इन्वॉल्व. इट्स नॉट ओनली चिल्ड्रन. हम जब भी होमवर्क देते हैं हम ऐसे कुछ सोच के देते हैं जिसमें फैमिली पूरा इन्वॉल्व हो. बच्चों को बोलते हैं आप फैमिली की पूरा मेनू आप डिसाइड करो, आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके पास पेरेंट्स है, आपकी यंगर सिबलिंग है, सबकी टेस्ट चॉइस हेल्थ को देखते हुए आप एक बैलेंस डाइट मेंटेन करो. कब आप पानी पियोगे, कब आप फ्रूट खाओगे एंड कितनी एक्सरसाइज करोगे एंड आपने कितनी कैलोरी बर्न किया. सो दिस इज ऑल टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ. सो दैट कैन बी नर्चर्ड इन द स्कूल एंड इट कैन गो to our family. So there is a beautiful school and family partnership in our safety culture. Next slide please. So together for a cleaner, healthier neighborhood, spreading awareness through Nukkad Natak, lot of street plays we do. We go to the market areas also, and उनको भी हम ओरिएंट करके आते हैं कि प्लास्टिक यूज मत करिए. एंड पूरी एक बच्चों की जो नुक्कड़ नाटक होता है, तो ये बहुत हमारी मार्केट एरिया में वेरी वेल अप्रिशिएटेड. एंड जैसे कि मैम जब बच्चे आते हैं हमें भी पहले बोल के रखिए, हम भी तैयार रहेंगे उनके लिए. सो बहुत अच्छा लगता है हमें. स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन स्लम एरियाज. अब भरत बिहार, ये द्वारका में मेरी स्कूल है दिल्ली में, एंड एक पूरी एरिया को हमने अडॉप्ट करके रखे हैं. एंड यहाँ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर देयर. सो उनके लिए हमने काफी काम किए. उनकी बेटियां अकेले रह जाते हैं जब पापा मम्मी चले जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी, उनकी हाइजीन, उनकी हेल्थ के लिए, इवन उनकी लिटरेसी के लिए भी हमने एक लाइब्रेरी कॉर्नर बना के रखे हैं. एंड एक क्लास 11 की बेटी को लाइब्रेरियन बनाए हैं कि वो टेक केयर करे. This year my aim is to install a water ATM machine. They're not getting safe drinking water, so I am collaborating with Rotary Club. Maybe they'll help me. So 1 रुपए दे के आप 2 लीटर पानी लीजिए, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे देन किसी चीज का वैल्यू नहीं रहेगा. एक बार मैंने अपने स्कूल में किया था, सामने फ्रीज रख के जो हमारी कैंटीन की खाना बच जाता है आफ्टर पीरियड, सो मैं छोटी छोटी पैकेट करके सामने रख रही थी कि जो नीडी है खा लेंगे. Some days after I observed that the able-bodied persons are taking that, though, so I stopped that and then I involved Robin Hood Army. So they come and take the packages, and बच्चे खुद पैकेट करके देते हैं so that they should know they should not waste even single particle of food. सो वो वैल्यूज भी हम देते हैं कि आपकी तरह बहुत बच्चे हैं जो उनको इतना प्रिविलेज नहीं है, इतना सेफ एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं, उनकी लाइफ को हम कितना सिक्योर कर सकते हैं. सो एक्चुअली पूरी कम्युनिटी को अवेयर करना. नाउ आई विल कम टू मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. I work in this field only because ma'am knows inclusive education, mental health and well-being. So मेरे स्कूल में एक structured mental health program चलता है जिसके नाम है स्वमान, सेल्फ एस्टीम, एंड ये करिकुलम में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है. सो इट इज नॉट वन डे की प्रोग्राम या मेंटल हेल्थ वीक में कोई प्रोग्राम कर लेना, ये साल भर चलता रहता है. एंड राइट फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12
we keep on doing this. You can see in my school, there is a calm zone. There is a wellness cafe, which is nurtured by the teachers and by the students. And they sit there, they de-stress, they can interact with each other, they talk to each other. And it's a very nice place. And in the calm zone, mental health first aid kit is kept there. Some soothing music and detox water, everything is there. You can see it's a small corner we have shown here. And next, please. So I have a structured body program. Initially, parents thought that no, our child would not be a body. पढ़ाई खराब होगा, हम body नहीं बनाएंगे हमारे बच्चों को. Now they are competing that their child should be a body, because I have developed that rubrics and giving a beautiful certificate that they are the soulmates of special needs children. Any child coming to school, every child is given a body. Any new child coming is getting a buddy, and I call them as soulmates. So very proudly they wear that buddy badge, which is really lending a hand, helpful hand. And I have a buddy bench also. I have 9 to 10 buddy benches kept in different places of the school. Even I can sit there if I don't feel okay. It's okay not to feel okay also. So any child sitting there, somebody will come, lend an empathetic ear, listen to them. Just sharing your burden will relieve you a lot. So buddy bench is working beautifully in my school. Right from nursery to class 12, of course, we have oriented them how to use this buddy bench. And you can see a visual language of India. These are done by children only. So beautifully they have displaced, and then they're sitting there buddy bench. Next. This is a new initiative which I have started, and parents are appreciating. So I'm very happy. What we do, the class teacher has given a note: handle with care. You can read that. So if anything has happened at home, day before, last week, some death, some conflict, any untoward incident, we don't want to hear what has happened. But the parent just have to write in the diary note: handle with care. Or a message to the class teacher for senior student: handle with care. So we know that the child is not coming in proper framework of mind that day. So कभी कभी ये होता है कि बच्चे वर्क सबमिट नहीं करते, होमवर्क नहीं है, तो डांट पड़ जाती है. जब हमें ये नोट आता है हैंडल विद केयर, वी टेक केयर ऑफ द चाइल्ड फॉर द होल डे एंड मेक श्योर दैट द चाइल्ड फील्स हैप्पी एंड नर्चर्ड एंड केयर फॉर. So this is even class 12 also. Maximum note is coming in class 11 and 12. Handle with care. So there is a huge fight with father last night. So please handle with care and try to counsel the child. So this is a very nice initiative I'm doing for last 3 years and working beautifully. Next slide, please. This is very really a live survey, I would say, on bullying indicators. You can see every school, we can't deny that bullying is not taking place. It starts with name calling, which is so rampant at home also. Parents are also name calling, body shaming. कोई मोटा है, कोई कलर में डस्की है, वो है. Parents are also doing, even relatives are also doing. It affects their self-esteem badly. So we did this survey on bullying indicators. You can see verbal teasing, physical, emotional, cyber, discriminatory, social, all these parameters we did this. Another beautiful activity I did, I wish my teacher knew. I wish my teacher knew that I'm not feeling well today, or I'm feeling lonely, or I'm struggling because I have dyslexic problem and nobody's understanding me. So there are different parameters. I wish my teacher knew. So I did this activity. It is peer educators whom you see on the screen. They are peer leaders, properly trained in mediation and negotiation skill. So they are coming and doing these activities. Next slide, see. Please. Yeah, this I did for NCRT when we were doing mental health survey. Kashyapi ma'am and me, we were working on it. So I shared this with NCRT mental health survey. Again, it is live. So I did this that 3 to
5, you see the dynamics are different. 6 to 8, the dynamics are different, and 9 to 12 different. 3 to 5, sibling rivalry, and then parents are not giving what they want. So different dimension there. What worries them? So we called it worry jar activity, but we were doing a mental health survey actually. So 6 to 8, body image, approval, acceptance, constant validation, all those things come. And 9 to 12, of course, academics, peer pressure, self pressure, societal pressure, a lot of things are coming. Career path. So we saw the dynamics are changing, and we really did the analysis and tried to deal with it. Next slide, please. So these are peer educators in action. They go to each class, right from class 3 to 11, they go. And they are trained. We select them, and mostly they are school council body, some of them, and even class 11th also they are involved. So when they go to the class and ask class 8 child, 112 child is asking class 8 child, what worries you? What is your problem? What is relevant now? What's going on in your life? What is bothering you? They come out, they confide in them rather than with the teachers. Teachers, most of the time, they find that maybe they'll be judgmental, maybe they'll give their opinion. So there is some apprehension, but with their own peer educators, they come up with their problem, and then they come and discuss with us. So together, then we deal with them. So this is a collaboration. Whole school works with them. This is inclusive and accessible school environment, which initially I spoke to you. All facilities are there. Toilet, disabled friendly toilet, lift, tactile path, proper school signage, everything is there. So facility for CWSN or children with special need, you can see all the facilities are there. Next slide, please. These are first aid. Medical room with 4 beds. We have a medical room, and every child medical record is maintained. Nowadays, it is very, very important. If any chronic illness, now a class 1 child is taking insulin. Kashyapi ma'am, can you believe? Class 1, class 4, class 5, class 6, children are taking insulin doses in the school. So we have to be very, very careful. Children are coming with epilepsy also, besides those special need children. So all the teachers need to be oriented. I have given the flat signs of 21 disabilities. And suppose say Down syndrome, there are 32 symptoms. So a child may not display 32, but 4 or 5. So they keep on observing and keep noting. Then we call a team of doctors and show them our observation. Then we send them for formal assessment. We are not doctors, so we don't diagnose. We just observe and keep record, and then send them for formal diagnosis. So this is how mental health, physical health, and all पंचकोश विकास की हम ख्याल रखते हैं. The last one is आनंदमय विकास, which is internal bliss and happiness. The very aim of education is to really nurture happy minds for me, and happy teachers can create a happy classroom. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Sudha ma'am. Every time that I listen to you, I have a new learning. So this time I really love the handle with care thing. It's a small initiative, but I'm sure it does wonders for. And I was wondering if the teacher care also has an opportunity to say, I wish my students knew this. At times the teachers are so stressed. Kashyapi ma'am, exactly same thing my teacher said when they don't feel that today's class was very good, something gone amiss. So she said, I wish my teachers could understand me. That today I was not in my proper framework mind. So what I have started, mood meter activity. When you enter the class, every child emojis are there. Today I am feeling sleepy, I am agitated, I am sad, I am happy, I am excited. So teacher is also identifying her mood. Today I am not so okay, or today I am not well. Then I saw in a class that students are coming, ma'am, पानी पियेंगे क्या? आज आप बैठ के पढ़ाए. You are not well. We could see from the mood meter. So it works beautifully. Wonderful, wonderful. Bhagwan sir, how much time do we have left with us? So maybe another 15 odd minutes you can take. Okay.
Okay. and Are post there it to any have. questions in the Yeah, chat yeah, so box? we have a few of the questions, but another 10-15 odd minutes you just speak about whatever Okay. topic you feel comfortable with. And Okay. then we have certain questions arrived at our this thing. Post your session, we will start the Q and answer session. Wonderful. Wonderful. So in that case, I want to, are you able to see my screen? Yeah, 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 yeah. Yes. Okay. So now that a micro perspective has been dealt with by Dr. Sudha in detail, what I'm going to do is, and she's built in how a whole school approach needs to be taken up if we really want to ensure safe and secure schools. I would be talking about the second aspect that Bhagwan sir began with, and that's a multi-sectoral approach. So not just multi-stakeholder approach, but we also need a multi-sectoral approach. And this comes from Bronfriend Brenner's theory of really looking at an ecological approach to any event for that matter. And education needs an ecological approach where you have so many stakeholders actually engage and really contribute towards the development of a child. And therefore, when we design the entire school safety and security guidelines, at that point also, it is not just while the Department of Education initiated the activity, we brought in different stakeholders, different sectors actually really play a major role in it. And where do these different sectors or ministries get their data from? It's certainly from the schools. So why I'm bringing this background work to each one of you is how you can contribute towards a very updated resource for different ministries to operate and execute on. So while we were designing the school safety and security guidelines, we thought it is very important to have a multi-sectoral approach. So while we working as a core from the Department of School Education and Literacy, we need the Ministry of Law and Justice to come up with laws, provisions that prevent school violence, substance abuse, and breach of any safety norm. And therefore, we know how the POCSO, the POSH Acts, and lot of other safety acts have come in, which we look into the details of it later. We also need the Ministry of Women and Child Welfare take up a proactive role in supporting victims, provision of specialized help for families at risk. And these are some of the information that field level organizations like schools can feed into. For example, the Ministry of Information and Broadcasting. Now, until I became a part of this committee, I really, because I'm not active on Netflix, I have no clue. I don't really have time to watch. So I have no clue of the kind of serials and the web series and that comes. It is only students and school principals that I engaged with who actually told me, ma'am, आपको पता है इस प्रकार का material web series आती है, which brings in so much of violence. I was shocked to see the kind of violence, the kind of abusive language some of the web series that children watch on Netflix brings in. Some of the ideas of violence that children come up in schools actually are drawn from these web series, from some of these video games that the children watch, from a lot of such material. Now, it is this survey or this information that schools can send into the Ministry of Information and Broadcasting to really say that we need to ban this. We need to really put either child lock system for some of these web series that anybody below this age cannot, or we need to really ban them. Not and and there has to be some censoring, like we have a censoring for movies, there has to be some censoring on language even for web series, and even for the um, kind of material that gets posted, the kind of family values or the kind of social values that some of these web series are promoting. And therefore, all these content, not just from the point of view of entertainment, but also from the point of view of academic and educators, we need to assess uh, and evaluate and kind of some of these content has to be restrained from the active um, um,
webcasting of it or broadcasting of it. So this information is something that schools can bring to us in that sense. Surveillance and censoring of apps, as I was mentioning, gaming sites and other social media sites, formulating cybersecurity policies for schools and colleges is really very, very important because the kind of addiction, there are a number of surveys now, different countries have taken up on how gaming patterns, how access to utilization of mobiles, how it is affecting the brain functions, and in fact, countries like Denmark, Australia have gone ahead to ban the use of educational technology for school-going children just because it is affecting the neurological functioning and the growth of the child. And therefore, it's very important for the kind of small mental health survey activity that Sudha ma'am demonstrated, such kind of survey activities being conducted in every school to really bring out, maybe it doesn't have to be very research ingrained, but it is sufficient to give us data on how the mobile habits are impacting the behavioral patterns of children, how the mobile habits are impacting the mood patterns of children, how the mobile habits are impacting the food habits, even the kind of, so maybe a critical watch of some of the advertisements that come in. So do a child understand what he has to buy and what? So wisdom in really purchasing, wisdom in marketing are also some of the activities that schools can bring in. And then bringing in all of this data to the ministries to really help them reform policies, design policies that once again support school safety and security. Because as long as it remains an isolated activity, every teacher, every school principal will struggle, every parent or family will struggle unless we really understand it to be a multi-sectoral, multi-stakeholder approach. Perhaps we will not be able to ensure safe and secure schools. So parents also need to understand this and play an active role in it. And I'm just hoping that we also have parents in this group, Bhagwan sir. So it's really very important. The Ministry of Health and Family Welfare, the regular health monitoring of students. The government also has this Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, RBSKs. So every child has the health card and really active monitoring, regular monitoring, map the body mass index, measuring that, really looking at the nutritional levels, all of it is very important. And this also going as a diary to the parents, which is kind of a feedback as to what are the food habits that you have at home. Because of late, what we see is both parents are working and therefore they are not able to find time for child, not able to find time to spend active time with the children. And therefore, the replacement of active time is you replace it with money, replace it with material, replace it with something which gives immediate gratification to the child. And in most cases, it is chalo hum hotel chalte hain, चलो हम फास्ट फूड खाते हैं, चलो हम वीडियो गेम खेलते हैं, चलो मैं आपको मोबाइल दिलाता हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपको समय तो दे नहीं पाया या दे नहीं पाई, तो उसका रिप्लेसमेंट बच्चे को हम इस प्रकार से दे रहे हैं. Gradually this is being a reality in lot of families where the active family time is replaced by material, money and some such aspects, which is impacting the growth habits, the mood habits, the nutritional habits, and lot of aspects of the child's development. So conducting fitness awareness campaigns in schools. So in this way, a multi-sectoral approach is very important. But school is that institution that actually is a ground, is a fundamental institution that can really monitor all of this and feed data into. And every ministry has to play an active role in really ensuring that school safety and security is promised. So, and therefore, what is important, what we need to really have is for managements to ensure safety standards as per the guidelines, conducting regular monitoring. Every school management, be it government management or private management,
So they have to ensure this. In many the incidents that Bhagwan has shared is because a management places profit before people, that we find some such incidents happening where school safety measures are not taken care of, where you have not valued the life of the individual. Unfortunately, the principal or the teachers may get caught in the process, but it's the management that is overly pushing profit over people. And therefore, it's very important that somewhere our policy provisions also need to make accountable the managements to ensure that safety standards and guidelines are properly taken care of. Certainly, parents are very important stakeholders. So, spending time than money for children and following the school safety guidelines, I think, should be the underlying core of every school in your parent teacher meeting to really assess and find out what is the active parent child time that they have at home. And that active time should not include commonly sitting together and watching a TV program. No. When the TV is shut, when mobile is shut and you're sitting with your child, what is that active time that you are spending with your child is very, very important. Unless that is really marked, uh, because I know of parents जहाँ पे मतलब आप मेट्रोज में या ऐसे भी होटल में आप गए हो, आप बहुत सारे ऐसे डाइनिंग टेबल देखेंगे जहाँ पे 5 में है। फिर आप होटल में मिलकर क्यों आए हो? कई बार मुझे वहां पे बैठे बैठे होता है कि मैं इस पेरेंट को बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, वो अपने में बिजी है अपने एडल्ट टॉक में, एंड द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन आर गिवन द मोबाइल सो दैट दे शट देयर माउथ एंड डू द वर्क दैट दे वांट टू. This cannot be an approach to child rearing, and this has to come. So our parent teacher meeting shouldn't be about child bashing, rather reflective questioning to the parent. So if a child is not performing, or if there are mood patterns which are not healthy, or if there are health patterns or habit patterns which are not healthy, we need to interrogate the parents than the child, and this has to happen at the school. For principals, very, very important to constitute SMCs, school safety committees, engage PTAs, develop a positive school culture and ethos which welcomes transparency, builds collegiality and trust. There has to be a feeling of belongingness amongst every stakeholder in the school. For education departments and affiliating boards, you really need to think of accountability frameworks, which puts at task some of the managements that are not adhering to the school bylaws, safety bylaws, and really revise and be very sure of or take stringent actions against those schools which are not following the school safety norms and safety audits, which is very important part of any school process. So it's very important at the macro level to really ensure this. So as a school management and as a principal, what is it that you can just begin with? Ma'am has already shared about the school safety committees, their objectives, their activities, and this is the minimum essential that every school should have. The kind of evacuation plans that are shown. In many schools, you have only one entry exit. एंड यू वंडर बच्चे शायद कभी भाग के नीचे उतरना हुआ तो आधे तो स्टेयरकेस में ही एक दूसरे पर गिर के घायल हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज ओनली वन एंट्री एंड वन एग्जिट. देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर इवैक्यूएशन वे. So these are some of the safety norms which, before giving permission to the school, this needs to be ensured that you have to have multiple entry exits. You have to have an evacuation plan. You have to have displayed few numbers on the school notice boards at different places, be it emergency number of the police, the child helpline, the fire safety, and others which the children can contact in the time of emergency. So on 3 A's, the school leaders need to work, and I think it's efficiently shown by Sudha ma'am, so I don't even need to, but awareness, alertness, awareness, and action. In alertness, a wonderful activity Sudha ma'am mentioned was a safety walk. बिकॉज एज अ प्रिंसिपल मैं हर दिन देखती हूँ तो शायद बहुत सारी चीजें मेरे लिए रूटीन हो जाती है, मुझे नहीं दिखती है, पर कोई नया व्यक्ति उसको देखेगा तो उसको अलग एंगल से दिखेगा. दूसरा, पेरेंट एंगल अलग है, टीचर एंगल अलग है, और बच्चों का एंगल अलग है. तो बच्चों को पता है कि हमको कहाँ बुली हो सकता है या मुझको कहाँ डर लगता है. वी हैड अ वर्कशॉप विद स्टूडेंट्स अक्रॉस मैनेजमेंट्स
और इतनी जबरदस्त बातें उन्होंने हमको बताई कि उनको कैसा फील होता है, स्कूल सेफ्टी कहाँ महसूस होती है, कहाँ नहीं होती है. एंड इट वाज सच अ आई ओपनिंग सेशन फॉर अस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो अलर्टनेस से आता है कि हमारे बच्चे भी अलर्ट है, तो हमारे बच्चे भी देखते हैं, विजिलेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है, स्पेशल फोकस है वल्नरेबल एरियाज पे. ये होने के बाद आप अवेयरनेस की ओर लेकर जाओ. तो अलर्टनेस है तो उसके बाद फिर अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट लीगल लॉज, लेजिस्लेशन, प्रोविजंस क्या है, जो मैम ने पुलिस, दिल्ली पुलिस ने आकर किया वो भी एक अवेयरनेस है, एडवोकेट्स ने आके किया वो भी एक अवेयरनेस है, पेरेंट्स ने आके बात की प्यूबर्टी पे वो भी एक अवेयरनेस है. दीज आर ऑल अवेयरनेस कैंपेन्स. सो फर्स्ट अलर्टनेस दैट यू आर एबल टू नोटिस एंड ऑब्जर्व. So observe what are those spaces which where the child may feel vulnerable, है ना? What are those areas where you really need to work on. तो अगर आप मैम की सारी स्लाइड्स को डिवाइड करो, ये इन 3 चीजों में डिवाइड होगी. अलर्टनेस के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज की, फॉर एग्जाम्पल what worries you is also kind of reading the minds of children, right? I wish I could share is also about developing an understanding of the child's perspective and being alert as an adult. तो alertness के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, अवेयरनेस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है. एक बार अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए, अब आपको एक्शन करने हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ एसएससी, स्कूल सेफ्टी कमिटी, विजन बेस्ड स्ट्रेटेजिक प्लान एंड एक्शन, engagement with the parents and community, assessing safety reports and audits, ये सारे फिर एक्शन ओरिएंटेड है. जो ड्रिल्स हो रही हैं वो सारी एक्शन ओरिएंटेड है. आप किस प्रकार से जो नुक्कड़ नाटक और पूरा आप कर रहे हो वो भी एक एक्शन ओरिएंटेड भी है, वो साथ में सोसाइटी कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करना. The key role of school leaders therefore is alert, aware, action. तो अगर हम इन 3 एज पे काम करते हैं, वी विल बी एबल टू इंश्योर स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. और इन 3 एज पे काम करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच. ये कुछ डिटेल्स हैं उन लॉज या एक्ट्स की जिनका हमको भी भान होना चाहिए. और अवेयरनेस की जब हम बात करें तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज एंड देयरफॉर वर्क अकॉर्डिंगली. तो स्कूल्स में जब हम इंक्लूजन की बात करें तो हमको राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन का पता होना चाहिए, राइट टू स्पेशल प्रोविजंस पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ पता होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन कम्स अंडर द राइट टू लाइफ, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पता होना चाहिए. तो हमारा सारा पॉश पॉक्सो जो हम बात कर रहे हैं वो हमको उसके अंतर्गत समझ में आएगा. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. द राइट टू न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, duty of parents or guardians to provide opportunity for education. So this awareness, legal awareness is very important. And with this legal awareness for every stakeholder, perhaps we can ensure quality. Collaboratively develop school safety policy and democratically form a school safety committee, giving parents and students equal representation in the कमिटी. ये एक और स्कूल का मैं उदाहरण आपको, ऐसे कुछ कुछ चीजें आप अपने स्कूल में बना सकते हो. माई स्कूल हैज अ सेफ्टी कमिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्लान. एवरी चाइल्ड शुड नो दिस. आई एम ट्रेन्ड इन इमरजेंसी स्कूल इवैक्यूएशन. माई स्कूल रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस. Such play cards, such things talk about the value or the ethos or the culture. So does my school ensure or work on these ethos? Ethos is very important. I pledge to contribute towards safety and security. है ना? मैम ने एक बहुत अच्छा स्लोगन जहाँ पे पीयर काउंसलिंग की बात करी थी उसमें लिखा था, आई एम अ बडी एंड नॉट अ बुली. तो जब बच्चा ये कहता है और प्लेज करता है अपने आप को, दैट those words have a mental impact on the individual to actually prevent oneself from being a bully and just be a buddy and provide that helping hand to the other individual. तो मेंटल हेल्थ सर्वेस का उदाहरण मैम ने दिया जो कि हम कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इंटरैक्टिव टॉक्स बाय साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सब हमने उदाहरण के तौर पे देखे ही हैं. सो आई एम नॉट ब्रीफिंग ऑन इट. ये कुछ एक्सप्रेशंस बच्चों ने दिए थे. पेरेंट टीचर मीटिंग इज अ चाइल्ड बैशिंग इवेंट, बच्चों ने बताया. टू मच क्रिटिसिज्म ऑफ अ चाइल्ड, क्रिटिसिज्म अ चाइल्ड हैज टू फेस इन दिस मीटिंग. आप क्या बदलना चाहोगे? तो उन्होंने पीटीए के स्वरूप को बदलने की बात करी. Schools with bars everywhere are like prisons with CCTVs everywhere. We would rather appreciate trust. तो बच्चों को बहुत सारे जंगले हमने लगा दिए, बहुत सारे बार्स हैं.
तो वो उनको एकदम जेल वाली फीलिंग देता है। कहते हैं हर जगह एक सीसीटीवी, वो कुछ ऐसे पॉकेट्स में होना चाहिए। आप क्लासरूम्स और शुड बी environments where we are able to be ourselves, and there should be more trust than CCTVs and bars. ये बच्चों का कहना है। फिर एक और चीज बच्चों ने बताई कि बुली क्यों करते हैं। हमने पूछा व्हाई डू यू डू दिस, नेम कॉलिंग कहाँ से आता है। एंड दे सेड दैट वायलेंस इज अ विशियस सर्कल। ये कहीं का कोट नहीं है, ये बच्चों ने बताया है। आई वॉज बुलीड एंड हेंस आई वेट फॉर अ टाइम आई गेन पावर टू बुली द अदर्स। तो मुझे चिढ़ाते थे नेम कॉलिंग करके, तो मैंने सोचा अभी मैं आई एसोसिएट विद अ बुली। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू फील प्रोटेक्टेड। तो मैं नहीं कर पाता तो मैं एक बुली का दोस्त बन जाता हूँ, है ना, एक गैंग का हिस्सा बन जाता हूँ, ताकि मैं दूसरों को नेम कॉलिंग कर सकूं, एंड दैट गिव्स मी पावर। Make PTMs as child parent teacher dialogue rather than student passion events. See, उनके कुछ कुछ मैंने expressions लिए, but children came up with lot of things, how they feel, what they feel about what school safety and security is. And therefore, we need to come up with school safety framework and policy, which comprehensively explains the school safety plan and action. ये एक और स्कूल का मैंने सेफ्टी फ्रेमवर्क लिया है, जहाँ पे वो चार चीजों पे फोकस करते हैं: लीड, मोटिवेट, डेवलप अ कल्चर एंड इंट्रोड्यूस क्वालिटी प्रैक्टिसेस। लीड का फुल फॉर्म क्या है? लीडिंग स्कूल्स टू बिल्ड सेफ्टी कल्चर। दूसरा, एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम्स आप बनाओ। तीसरा, अलाइन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस, यानी स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उससे अलाइन करो। और एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाओ, डेवलप अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर स्कूल। तो उसे वो लीड कहते हैं। उसके आधार पे आपके विजन और मेंटल मॉडल्स चैलेंज होंगे। तो आपका ये फ्रेमवर्क जो है वो सभी के विजन और मेंटल मॉडल्स को चैलेंज करेगा। फिर इन विजन और मेंटल मॉडल्स को आप मोटिवेशन के थ्रू पुश कीजिए, है ना। पुश में क्या है? प्रोएक्टिवली लुक एट सेफ्टी इश्यूज। जो मैम ने सेफ्टी वॉक्स डिजाइन किए हैं, दैट इज प्रोएक्टिवली लुकिंग एट सेफ्टी इश्यूज। अर्ज टू एड्रेस दी सेफ्टी गैप्स, जहां जहां गैप्स है वहां पे हम उसको पूरी करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अक्वायर न्यू स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, जहां हमें लगता है कि भाई इसमें स्किल्स की कमी है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग कंडक्ट करो। हार्नेस स्किल्स ऑफ स्टाफ एंड प्यूपिल्स, मैम ने सभी डॉक्टर्स जो उनके पेरेंट्स हैं उनको बुलाया, पुलिस में है, एडवोकेट्स हैं, उन सबको। सो एवरी पेरेंट्स, सो हार्नेस वट एवर स्किल्स यू हैव इन योर ओन स्कूल। उससे एक बिलोंगिंगनेस आता है, उससे फिर वो स्कूल केवल मैम का नहीं रहकर वो सभी का बनता है। सो एवरीबडी स्टार्ट्स ओनिंग इट अप, everybody starts taking care of its safety and security. So in that sense you will develop the skills and capabilities of people. जब लोगों की skills और capabilities develop हो जाती हैं, फिर आप quality practices introduce कर सकते हो, which is systematic structures for evaluation, handbook with customized SOPs। एक स्कूल का हैंडबुक भी बन सकता है ना, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। आई रिकॉल एक स्कूल में हम किसी ट्रेनिंग के लिए गए थे और उनके स्कूल बस का कहीं तो एक्सीडेंट हो गया। अभी द स्कूल प्रिंसिपल गॉट टोटली बॉग्ड कि एकदम से क्या करना है। बट अगर ऐसे सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में हमने पहले से सोच के रखा हो और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया हो कि कल को ऐसा कुछ हुआ तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, who will be the person in charge, who will take the responsibility, who will be informed, who should coordinate, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हैंडबुक with customized SOPs for different aspects where you feel there these are safety and security concerns बना हुआ होना चाहिए स्कूल में, ताकि प्रिंसिपल हो, छुट्टी पर हो, नहीं हो, कहीं और व्यस्त हो, तो बाकी भी इन SOPs को पढ़ के वाइस प्रिंसिपल और द नेक्स्ट इन चार्ज कैन रियली गो अहेड। ओनरशिप एंड प्रोटोटाइप्स भी एक तैयार करके रखे हुए होने चाहिए हर एक स्कूल में। वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, FGDs जो इन सबको स्ट्रेंथन करे इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड through all these processes, what are you doing? You are actually developing a culture of care, a culture of concern, a culture of collegiality, which grows the seeds of safety. है ना, कल्चर ऐसे ही नहीं बन जाता, एक दिन में नहीं बन जाता। आपके विजन में है, आपके एथॉस में है, आपकी सब प्रैक्टिसेस में है, आपकी स्कूल पॉलिसीज में है, आपके हर प्रकार के
व्यवहार में, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या जैसे मैम ने बताया कि प्रिंसिपल से लेकर आपके कंजर्वेटिंग जो स्टाफ है, उन सब तक वो बात इक्वली जाती है, तब सबके बिहेवियर में आती है। तो इसलिए it is sowing the seeds of safety using a whole school approach and infusing into the existing curriculum, designing activities and expected outcomes. जब हम ये सब करते हैं तो एक कल्चर बनाते हैं। सो अगर आप स्कूल सेफ्टी को सही मायने में इंश्योर करना चाहते हो, तो यू नीड टू टेक अप लीडरशिप by developing vision, challenging mental models, create a motivational environment through which you push alertness, है ना, and then develop skills and capabilities through which you actually enhance individual potential, and come up with prototypes, SOPs, develop a culture through those processes that you create, and people learn from that and grow. तो आपको पूरे सेफ आउटकम्स मिलेंगे, सेफ स्कूल्स फॉर ऑल हो जाएगा, अलर्ट स्टाफ एंड पीपल हो जाएगा, फोकस और क्लैरिटी मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सीलेंट प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये भी मैम ने बात करी है, सो आई एम नॉट टॉकिंग। ये एक और स्कूल में गए थे जहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट सबने मिल करके ये एक कॉन्डक्ट बच्चों के लिए बनाया था, ऐसा ही एक कॉन्डक्ट उन्होंने टीचर्स के लिए भी बनाया था। सो कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर एवरीवन, एंड इफ यू ब्रीच दैट कोड ऑफ कॉन्डक्ट, हाउ इट वुड हैम्पर। फिर ये छोटा सा हर क्लासरूम के दरवाजे पे लिखा था, नोटिस टू ऑल स्टूडेंट्स, लीव एक्सक्यूजेस एट द डोर, इफ यू डिडंट डू योर होमवर्क जस्ट एडमिट इट। जो छोटे छोटे स्ट्रेसर्स बच्चों के होते हैं ना, उन सब के बारे में, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, आस्क फॉर हेल्प, इफ यू डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट, एक्सेप्ट द ग्रेड, रिजॉल्व टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो जहाँ पे बच्चे कुछ ड्रामा, कुछ नाटक, कुछ झूठ बोलना, ऐसा सब करने लगते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीजें वो मेंशन मतलब क्लासरूम के डोर्स पे, एंड दिस हैज कम अप फ्रॉम द चिल्ड्रन ओनली। And the last statement, the teacher says, I'm here for the following reasons: to teach you, to inspire you, to help you grow. I'll do my part and rest is yours. तो ऐसी भी कुछ कुछ चीजें with your teachers, with your children, you can really do and work it out. That helps you. These are some posters which are available on net by different organizations, and they are really helpful. You can use that. Stop online sexual harassment. It's unkind, unfair, unwanted, and you can't block out feelings. If going online is making you feel down, then talk to someone, get help. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने स्कूल में भी वी कैन मेक इट। हाउ फेक इज योर फीड, मैम इंस्टाग्राम फीड्स के बारे में बता रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली लुक एट इट। डोंट बी अ पैसिव वॉचर। हम किसी को बुली होता देख रहे हैं तो हमें उसको, वी शुड रेज आवर वॉइस अगेंस्ट बुलिंग। फर्स्ट स्टेप इज स्पीक अप। तो सभी को वो बोलना, ये कुछ लीगल एक्ट्स एंड आई एम श्योर दिस वुड नीड अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, बट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो और हम अकॉर्डिंगली स्कूल में एक्ट करें। Last but not the least, as we all discussed, whole school approach, and that's really very important. Whole school approach, multi-sectoral approach for uh, for all schools, and that is the way to actually look at school safety and security. So, with this, I would want to stop, and Bhagwan sir, we can open for others who, if there are some questions to be addressed. Yeah. So thank you so much, Kashyapi ma'am and Sudha ma'am, for this wonderful, wonderful session today. And as you both rightly mentioned over here, that is what the intention of the National Safety Council is, to reach out to the maximum number of the people and make them aware about the safety and all the aspects of the physical safety, emotional safety, and of course the cyber safety. The way both of you elaborated on these topics, the Kashyapi ma'am particularly viewed the policy and the ground level thing, and the concept and framework about the whole school approach in particular, where the all community has got us something to make a good learning experience, safe learning experience. And that is what we in industrial domain also teach across our industry. It is not the policies, it is not the rules, or it is not the other things, but the culture that needs to be in a place, be it in industry or be it in any school institute. Once that safety culture
it gets installed in any organization, in an industrial domain or maybe a school domain, the safety will definitely percolate to that. And of course, thanks a lot to Sudhaji ma'am also for her wonderful perspective that she brought, and basically the practical approaches that could link what is on the policy, what is on the paper, and how that can be implemented on the ground. So that thing will surely give us give our viewers, give our industrial safety professionals, teachers, principal, educators who have joined and later on who will watch these videos a good perspective as to how these things can be implemented in a broad way in their schools, and that is what the intent of entire this webinar. So we have through our mail we have received a few of the question, and barring that, there are still some participants which are on the Zoom. So if there are certain participants who wish to ask directly questions to both of them, please raise your hands and maybe you can connect to ask the question. Meanwhile, we have a set of questions that we have received through the mail. So this question goes to Sudhaji. As a practicing principal, what's one safety practice at your school that took the least of the investment but made the biggest difference? That is the question. I don't think I have invested financially anything to make my school safe. It's in your mind, and you mobilize all the resources available in your ecosystem, in the school ecosystem. So we have to mobilize resources. Unless we believe that it can be done, we can nurture a safety culture, it won't be possible. Yes, of course, the management has a great role to play. When I said that I need all the disabled friendly toilet, my mapping of the school, scanning, evacuation plan, all those things. Staircase has to be safe, lift, all these infrastructural facilities. Of course, my management supported there. But to create that awareness, sensitizing the whole stakeholders or creating a culture, I think I need to believe myself that it can be done. And it's a shared leadership. It's delegation of leadership. So it's a teamwork, collaboration, and even parents have equal partnership there. So I don't think huge amount of investment is required, of course, to make your school inclusive, in true spirit, to make it accessible. Infrastructure, I need investment where my management supported me. Otherwise, it's all our parents, and we created this culture and safety network. Networking with the community really helps. Yeah, thanks. So that is what we in our industrial domain call as a safety mindset. So Yes. everything starts with that mindset that yes, we want to have all those things in place in my school or my industry. All those infrastructural things and money part ultimately flows in if we have that strong mindset. So thanks for this answer. So we have one question for Kashyapi ma'am also. So what do you think is the single biggest gap between school safety policies? So you mentioned a lot of policies about NCPCR, maybe the NEP guidelines you are talking. So there are policy guidelines, but what is the biggest gap between those school safety policy on paper and what actually happens in schools? So this question is to Dr. Kashyapi ma'am. Uh, thank you so much. What I have observed in schools is the alertness, which I feel is a gap. Awareness comes at a later stage, but it's more about the alertness of the leadership, alertness of every individual in the school. So at times, there's somebody's mic that is on. If you could just put it off. Okay. Thank you. So alertness of every stakeholder is very important, and that is one really that's the real big gap at all stages when it comes to either physical safety or emotional safety, mental health and well-being also.
when we are not able to read the signals that the child is giving, when we are not able to see the gaps or not able to address, you know that there are cracks in the wall and we still think we can continue rather than dismantling it. I've observed this in a lot of government school systems, and you are just making up for it. And in a lot of private schools, the low budget private schools that we have, we know that the school is constructed in an apartment kind of thing with absolutely no open space, and still it's given a permission. So everybody is at fault. So when I say a multi-sectoral approach, it is from this angle. The one that's giving a permission and affiliation to these schools is also at fault. The management is at fault. The principal and the leadership is at fault. And even the parents who don't speak up for school safety, who don't look up for the value the life of their children in that sense. Everybody is equally. So it's the alertness that I feel is the biggest gap. So if everybody starts being alert and stringently practicing these school safety norms, perhaps we will be able to have healthy and happy child. Thanks, Kashif, ma'am. And I think this is what maybe the recent incident in Lucknow that reveal all those things, all those backlashes. Basic things were neglected, and unfortunately, as you rightly said, the parents we seek the bright future in terms of their academics, but this aspect of the safety, for example, in which coaching classes they have been admitted, whether the safety practices are there, whether the fire safety audit is being conducted, right type of emergency exits are available there. These things basically parents need to ask, but unfortunately parents have not taking those interest. In Yeah, fact, Bhagwan sir, now the schools are being replaced by these coaching centers. 11th 12th में बच्चों को स्कूल yeah, भेजते ही right, नहीं है, सिर्फ कोचिंग क्लासेस में सुबह से शाम, मॉर्निंग 8 बजे डब्बा लेकर बच्चा जाता है, शाम के 6 7 बजे तक उनका everything is there. Now look at the amount of mental stress that the child would get there, because then there's no other way out. right. So we have Asha Suleji who has got a question. She has raised her hand. Asha ji, please unmute and please ask your question, please. Dr. Kashyapi, your presentation was very good. The last three slides, which really had the act, would it be possible for you to show it to us again so that we can be aware of those acts, you know? I have just named them. Perhaps you would need a detail on it. And if you just go to the website of the ministry, you'll find the school safety and security guidelines. In its annexure, we have all of them in detail. I can present it once again, but you would not be able to see them so much so to write them all. So So maybe we will help you, Ashaji, over here. Maybe we have the mail IDs of the people who have joined the webinar, and in our also resources that we have provided, we have got all those laws and acts with us also. Whatever Kashyapi ma'am has shown us, we will surely share this after this webinar. Hope. Thank I you can very also much. share the Thank you. presentation. Yeah, so Thank this you. same presentation maybe we will share with all our participants. Yeah, sure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yeah. So. Once you're muted, We have one question for our audit team, and post that we will take last two questions for Sudha ma'am, and then so I will ask our audit award team, Mr. Sandeep, to answer this. So the question comes from our industrial friend. What is the structure of this NSCI awards, and what is the exactly the criteria for this evaluation? Thank you, sir, and thank you, Sudha ma'am, and thank you, Kashyap ma'am. So we have launched this school safety awards. Okay, so as explained by Acharya ma'am and Kashyap ma'am, we have taken the reference of various standards guidelines available in the India, like NCPCR, then National Education Policy, then MDA guideline,
NBC guideline, and based on that, we have also visited various schools. Okay, we have taken feedback from that schools, state level school, then national level school, and based on that questionnaire we have developed. And our objective to recognize, reward the school for promoting exemplary commitment to promoting safety awareness among the students and maintaining safe, secure, supportive schools environment for all students and staff. This is our objective, and with that objective, we have developed the questionnaire, and based on that questionnaire, that we will assess the applications of school, and we have created our criteria. We have experts, and based on applications received, we will do the assessment, and we will declare the award. In that school award, we have created two groups. That is a state level approved group, and the second one is a national and international boards approved school. So we will have good comparisons with that two different types of school. And in each group, we are having one gold, two silver, and three bronze. And not limited to this trophy, we will also give the certificate. The certificate who qualify at least 65% in initial assessment, so they will be also awarded with a certificate of merit. So that is our objective. The application form is available free of cost on our website. You can visit National Safety Council website and download, and you are having time. So this today is the July month, all whole August and the September. Last 30th September is the last date, and before that you may download all that schools, and they can submit in good number quantity. Thank you, sir. Thank you, Sandeep, for this information. So, maybe as Sandeep mentioned, these awards are there. You can apply these awards up till September, and this was our approach towards school safety for celebrating it as a monthly safety awareness campaign. But to continue, we are basically going through this award route so that the schools can come together. So this one is particularly this question has come from the DMC Education. She has asked, and basically the 2 days back we had a very good discussion about this element with her. Regarding, yes, there are private schools, we can have all those resources lined up, but what she is worried about is the corporate Corporation schools. corporation schools and the schools who can't afford. So here the question goes to Kashyapi ma'am, as how under resources schools approach safety where they don't have the budget that larger public schools have. While budget is important, जो हम पैसों के लिए बात करते हैं ना, वो सेम बात मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि पैसा जरूरी है, पर पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. तो आई हैव विजिटेड नंबर, मेरा अधिकतर इंटरेक्शन गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ होता है. तो आई हैव विजिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स where it is just the active engagement and the leadership of the school principal, वो किस प्रकार से कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ते हैं और वो पूरा स्कूल को विजन एक तय करके एक स्कूल, तो आपका स्कूल के लिए क्या विजन है और आप उसको चरितार्थ करने के लिए क्या और कैसे उसको करेंगे, क्या आपके पास वो स्ट्रैटेजिक प्लान है. If you have a plan, perhaps you will find donors. If there are no donors, let me say for that matter कि चलो हमारी कम्युनिटी या नेबरहुड ऐसा है जो बहुत ही गरीब है, वो आपको पैसा नहीं दे सकते, बट वो आपको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. यू विल फाइंड इन योर कम्युनिटी, यू विल फाइंड मेजन्स, यू विल फाइंड प्लम्बर्स, यू विल फाइंड कारपेंटर्स. तो मैंने ऐसे बहुत सारे एमसीडी स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को देखा है जो उनके स्कूल्स का जो छोटा ग्रांट आता है उससे सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बाकी उसको बनाने की जो लेबर लगता है, ज्यादा कॉस्ट तो लेबर का होता है, वो लेबर तो पूरा उनकी कम्युनिटी है, वो पूरा वो सर्विस देती है.
So how are you engaging with your community? How do you make an active part of your school? एंड ये चीज आपको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करने के लिए चाहिए होगा. बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सिक्योरिटी just by in building emotional connect, by building collegiality, by developing an ethos of care and concern, आपको कर सकते हो. So I know of a school. I had just been to the remotest part in Mizoram, और वहां पे बच्चों को जो एकदम अंडर प्रिविलेज्ड है वो भी बच्चे थे, पर जो स्लो लर्नर्स हैं बोर्ड के एग्जाम्स के दौरान उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देने थे, एंड पेरेंट्स केम अप टू वॉलंटियर. उन्होंने रात को उनके रुकने के लिए तंबू बांध दिए, घरों से खाना बन के आता था, उनके वॉशरूम की फैसिलिटीज, तो एवरीथिंग द पेरेंट मैनेज. व्हाई? बिकॉज द स्कूल टुक अप एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर लर्निंग टू द चिल्ड्रन. तो एज अ लीडर हम विजन क्या रखते हैं? अगर हमारे विजन में क्लैरिटी है, अगर हमारा ध्येय पक्का है और हम वो चेंज लाना चाहते हैं, दृढ़ हैं, तो सपोर्ट आपको मिल जाता है. आई हैव सीन दैट. हाउ आर यू एबल टू क्रिएट? एंड दिस इज अबाउट रिलेशनल कैपिटल दैट एवरी स्कूल लीडर नीड्स टू लर्न टू बिल्ड. हाउ हैव यू डेवलप्ड योर रिलेशनशिप्स? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, सभी के साथ. Yeah. So yeah, yes, as you rightly mentioned, these elements are absolutely necessary, and maybe this webinar and this YouTube live is being listened by our industrial friends also. So we have, maybe during my first narrative, we have also asked them. Maybe few of the industry people are asking how we can contribute in this initiative. एब्सोल्युटली, बहुत सारी स्कूल प्रिंसिपल्स बहुत सारा सीएसआर डोनेशन लेकर के Right. आते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग एक्चुअली. Yeah, yeah. So through this webinar and through this YouTube live, I also urge our industrial partners, industrial people to get to know your nearby school, specifically the under-resourced school. Help them to build the fire extinguisher system. Help your knowledge, industrial knowledge of so many years. Go there, have the workshops conducted for those people who may not afford this. So this is a great idea to start with in this journey. And today we will end up with the last question to Sudha ma'am. What's a realistic first step schools can take this year on a student mental health without needing big budgets? Again, budget, but what are the first steps regarding the mental health? You demonstrated in your this thing that a lot of initiatives you had taken. So key one or two steps, pioneer steps, having a big difference that can be taken by the schools to start this journey. तो मेंटल हेल्थ के लिए आई बिलीव दैट एवरी टीचर हैज टू बी ए काउंसलर. वन काउंसलर इन स्कूल, वन स्पेशल एजुकेटर कैन नॉट डू मैजिक. लाइक जैसे कश्यपी मैम बता रहे थे, पीटीएम में हम लोग आजकल ऐसे पीटीएम नहीं करते कि सारे पेरेंट्स को एक साथ बुलाएं. सो वी ऑल्सो कॉल पेरेंट्स कैटेगोरिकली, जिनका सोशियो इमोशनल इश्यूज है, किसी का डिसिप्लिन इश्यू है, कोई स्लो लर्नर्स है, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है. सो हम कैटेगराइज करके पेरेंट्स को बुलाते हैं, प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन दे के. वो डायलॉग ही चेंज हो चुका है, ये अभी मनोलग है नहीं. एंड मेंटल हेल्थ के लिए आई वुड से दैट इट हैज टू बी अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इनटू योर करिकुलम. इट हैज टू बी एम्बेडेड. मेंटल हेल्थ ये वन पॉइंट ऑफ टाइम में ये प्रोग्राम नहीं होना है. एवरीवेयर मेंटल हेल्थ फॉर टीचर्स ऑल्सो. So mental health for teachers, for students, for all our staff. So it is a culture there that well-being is not an option. It's not a choice. It's actionable, and it has to be a right, every child. So now even I have a bipolar student in class 12 in my school. So mental illness has been incorporated in 21 disabilities. So we are now receiving children who are schizophrenic, who are bipolar. So we are dealing with them. These are serious issues. But otherwise, सारे बच्चों को as young as class 6 children are having mental issues or health problem. So first thing is sensitizing children. Going to counselor is not a taboo.
expressing, providing multiple opportunities, platform where children can talk. So we have session wellness Wednesday or let's talk. I have let's talk session where teacher, parent, me, my students can book a slot. So we want to share something. So that kind of platform has to be provided to children where they can confide, they can express their emotions. That's the first step. Yeah. Identifying emotion, labeling emotion, expressing emotion, then only a child can regulate. We can help the child to regulate. So that's very important. Yeah, I will strongly correlate this with our industry domain also. Like what we ask our supervisors, who are the frontline engineers, who are directly dealing with the operators, and that is how we percolate the safety in schools. Maybe as you rightly mentioned, every school may not have the counselor rightly available. The teacher there can play a very pivotal role because they are there with the school kids for maximum amount of time, and their behavioral changes can be identified by the teacher, and teacher can be the best counselor, I think. And in that regard, as you rightly mentioned, the schools can train the teachers for being a counselor in this journey. So with this note, I conclude this webinar. Very wonderful and very learnable experience for us also at the National Safety Council, and that is what the intent of this webinar. And I think it served the purpose. We got a lot of knowledge through this. The practical approaches that both of you have shared will surely help us as a National Safety Council to take this journey ahead. And again, with this note, I thank you, both of you, and as well as the audiences we have joined through this Zoom meeting as well as through YouTube live. Thank you so much for this wonderful discussion and interaction. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you, Namaskar. sir. Namaskar. Yeah.